Hmm. मैं तो अनम्यूट कर दिया। हेलो Now learn. हाँ. हेलो Yes, yes. shall we start? How many participants, sir? Uh, 17 participants. 18 participants, ma'am. Hello, ma'am. Am I audible? Hello, ma'am. Hello. Hi. Hi, ma'am. Wish you happy International Women's Day. Same to you, ma'am. Thank you so much that you have connected with us. Am I audible to Draupadi D Trust Neera ma'am? Neera Mishra ma'am? Neera Mishra ma'am is has unmuted all of us. I think ma'am not join it. Neera Mishra ma'am is not joined Neera it. Mishra ma'am has joined, but she has, I guess, she has muted it. Hello, good morning, everyone. Good morning. Ma'am is joining in 2 minutes. Okay. Gadgil sir is here. Rahul sir. Yes, yes. Okay. Uh, Dhara team, all of you. Ketan sir, Ketan Jatale sir is here. Yes, ma'am. Thank you. And sir, just check out if our college teaching staff, all of them have been. I could see that there are 17 participants, so others are not yet joined. If that is in progress, then I guess that's a good thing. And if we could, even principal sir, Shital Patil ma'am, Yes, ma'am. Yes, yes.
Ma'am, please inform Principal Sir to join as well. if Okay, ma'am, possible. I will inform him. Prachi Patil ma'am is not here. Archana Nimade ma'am is here. Yes, yes. Prachi Yes. madam is not, I think. She hasn't joined yet. Yes. No. All the staff member are requested to join as soon as possible, so that when the opening speaker will when I will introduce the opening speaker, we should be joining together. Yes. Neera ma'am, could you please hear me? Could you Yes, hear me out? I can hear you. Okay, okay. So shall we start? Shall we start then? You decide if you want to wait for someone. I have no issue. Wait Just for 2 minutes, ma'am. Just for 2 minutes, because the principal. to 5 minutes Hello, for ma'am. people to join. 2 to 5 minutes. Yes, 2 to 5 minutes. Yes. Am I audible? Am I audible? Perfectly, ma'am. So let's wait for 5 minutes that others join. Not a big issue. Yes, we could. Thank you so much. Hello. Uh, hello, ma'am. Meeting is Yes. on live on YouTube. So all the students requested to participate or join the meeting. Yes. So all Meghna the- madam, Ketan sir, Shital Patil madam, I requested to send a message on the WhatsApp group to join the student on YouTube also. Thank you so much, sir. Thank you so much. Chaudhary sir is not here. Lahi sir is not here. Anand. MC department faculty, they are not here. No, Yes, I am here, ma'am. Ghanshyam Parkar. Ghansam Pakhade sir is here, I know. Nitin sir, then Chaudhary sir, Yes. then Lahe sir, Bhusan sir. Yes, I will call. Rahul sir, please coordinate. Yes, And yes. other- I will call Uh, him. Nimade ma'am, Archana Nimade ma'am, Dr. Archana Nimade ma'am. Yes. He's here. Ma'am, could you just request sir to join, your HOD sir? Yes, ma'am. Thank you. We have time, 2 to 5 minutes. Let's wait. Anand, can I play that 2 small clips of mine on this? इसमें है वो clips वो जो हमारी ना 3 मिनट वाली या you 5 Jafar sir, are you here, Jafar sir? Yes, madam. Sir, please take some of the photos of our session, Okay. and these photos are officially recorded, and it will be stored, for our resources, upcoming Yes, resources. madam. I am here. Yes. Thank you. Ma'am, he is unable to connecting with the Zoom link. He will be try with the YouTube link. Okay, no problem. Thank you so much. No problem.
Shital Patil ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I just texted you something. Please check the chat. Check Okay, out ma'am. the chat. Okay, ma'am. When you introduce ma'am, I have to show a video, so please. Hello, Yes. hello, good Hello. Yes. good morning. May I have the permission to share screen? Uh, Hello. uh, yes. Are you from the side of Neera Mishra, ma'am? Yeah, ma'am. Yes. After the introduction of ma'am, I would like to show a video of her. Yes. No problem, sir. Looking ahead. No problem. That's not a problem for us. So may I have the permission? Yes. Yes. I Yes. can. If yes, yes. Go ahead, sir. Go ahead, sir. We don't have any problem. So ma'am, I need the screen sharing option from the host only. I've Okay. I've Okay. requested from my side. Okay. Jafar sir, are you following this? Are you Yes, madam. following Yes, this? madam. Noted. Noted. Yeah. I have it now. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Saraswati College. We have 19 participants till now. So just waiting for another 1 minute. I'm just waiting. Neera Mishra ma'am, I'm just waiting for our institute head, Dr. Santosh Bothe, to join us. So just give me another 1 minute. There, please continue. Yes, yes. Uh, so are you here, Dr. Santosh Bothe, sir? Madam, I'm here. Please continue. Yes, yes, yes. So I will be listening to your program. Please continue with your schedule. yes, sure. So very good morning to all of you, and let me just wish all of us as a happy International Women's Day 2024. We have a reason to celebrate, and the reason that we have found today to take care of our biodiversity system and our ecosystem altogether. So the theme is like, as I said, as we have conceived it, like celebrating soil, water, and humans. The speakers, they have understood that we will be relating the kind Say of water है ना, तो हमारा ये वीडियो आ uh, गया इसका नीरज all of you, नीरज all of you, please
mute your this thing. Your background sound is coming. So we have already started out the kind of purpose that we are going to develop on our campus. Let me introduce Neera Mishra ma'am, who is the founder of Draupadi Trust, Dream Trust, and she has been working across the country with a fine-tuned reason, and she has many reasons to celebrate today. So she is a very empowered woman, as I believe. I have seen her working continuously, consistently, irrespective of her visual challenges and other challenges. So the women power aligns with that, and the women power aligns with the power which is given to us by God as a gift. So we could safeguard the nature. Yes, if we believe that we could do that, we will do that. With this note, I would hand over Neera Mishra ma'am today to address us on the areas that we have highlighted. Thank you so much, ma'am. Passing to you. वॉइस ब्रेक हो रहा है देर में Neera Mishra ma'am, yes. नमस्कार बहुत बहुत शुभकामनाएं आज महिला for the International Women's Day. And to be very honest, you just now mentioned water. We are actually celebrating this as Ma Yamuna's contribution to the Rajdhani of Bharat, as a woman who has nourished this land for centuries. So many congratulations. A very small video of my journey of 20 years. And after that, towards the end, I would like to end with our dedication to Ma Yamuna, that we are taking up a 3-year project. And if any of you would like to associate with that project, it would be a great blessing to Ma Yamuna that people across the nation have joined us. So may I just begin with a brief introductory video that will give you an overview of my small journey, so that then I can further talk about women issues and women empowerment, how we have seen the downs of women empowerment in our Bharat due to whatever factors, and why we need to not only talk of Viksit Bharat, but we also need to talk of how women's contribution in nation building is very crucial, because we form half the population, also contributing in a major way. And that has been the tradition of Bharat. So Anand, please just could you play the video first so that they get a brief introduction. And namaskar to the principal and all to the faculties. I'm sorry I can't take your name because I don't know the name. Namaskar, ma'am. Namaskar. The principal of our college is Dr. Santosh Bothe, and he believes in nation building. His purpose is behind his leadership is nation building. Ma'am, I have a request. Majority of our students are really good in Hindi. Tell me, I'm hearing you. Yes, majority अच्छा, तो मैं हिंदी में बात करना चाह रही थी, but I wasn't sure. तो अगर मैं हिंदी में बोलूं तो अच्छा लगेगा? Very nice. Very nice, आज हम ma'am. अपनी मातृशक्ति और अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को सेलिब्रेट कर रहे हैं. So we start with this small video in Yes. nation building. So let's start here. Full sound. नहीं आ रही. टीम द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट की ओर से आप सबका अभिनंदन और हार्दिक शुभकामनाएं। जब सशक्त भारत G20 की अध्यक्षता का उत्सव देश भर में मना रहा है, आपका प्रिय द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट भी अपने 20वें वर्ष में पहुंच गया है। पांचाल देश की राजकुमारी द्रौपदी के नाम और जीवन से प्रेरित
इस ट्रस्ट के दो मुख्य उद्देश्य थे, सशक्तिकरण और अपने प्राचीन धरोहर, इतिहास, वैभव की जड़ों को सींचना, ताकि आने वाली पीढ़ी और आज की पीढ़ी भी अपनी संस्कृति से जुड़े और गौरव पहचाने। इस 20वें वर्ष के सारे कार्यक्रम द्रौपदी को समर्पित करते हुए हमने इसका नाम रखा है श्री श्री द्रौपदी महोत्सव। धन्यवाद देती हूँ कि 20 वर्षों तक आपने हमें अपने स्नेह और आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचाया है। Draupadi Trust in 2003, we focused on empowerment of women and youth through capacity building and skill enhancement, because due to globalization there is a strong need for trained manpower, which our country with this vast population can actually harness. साथियों, भारत ने अपने बीते वर्षों के अनुभव को देखते हुए विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन को लेकर आगे बढ़ा है। विमेन डेवलपमेंट से विमेन लेड डेवलपमेंट के प्रयासों को वैश्विक मंच पर भी ले जाने का प्रयास किया है। भारत की अध्यक्षता में हो रही G20 की बैठकों में भी प्रमुखता से विमेन लेड डेवलपमेंट के इन प्रयासों को नई गति देगा। The bird does not sing because it has a reason. It sings because it has a song. Bharat celebrates its presidency of G20. Our Draupadi Dream Trust celebrates its 20th year with a special C20 under G20 flagship program titled Indraprasth Talks with ambassadors on shared heritage legacies of the Vasudeva Kutumbakam. Speaker Shri Om Birla ji inaugurated this special program in the presence of almost 15 ambassadors and other dignitaries on July 27, 2023 at the India International Center, Indraprasth. आज माननीय स्पीकर हमारे लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी यहाँ उपस्थिति महारानी द्रौपदी को पुनः और महारानी द्रौपदी द्वारा अपने देश की हर महिला को वो सम्मान प्राप्त हुआ है जो कि हम बहुत दिन से द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट द्वारा आयोजित महोत्सव, जिसकी यात्रा को 20 वर्ष हो चुके हैं, मैं इसके लिए इस द्रौपदी ड्रीम ट्रस्ट के अध्यक्ष मीरा मिश्रा जी को बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने भारतीय संस्कृति, सभ्यता, विरासत और हमारे आध्यात्मिक धर्म के संदेश के साथ द्रौपदी के बारे में देश को अवगत कराने का काम किया। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत युग युग से हर युग की हर युग का ये भारत दर्शन, भारत दर्शन, हर युग का ये भारत दर्शन। इंद्रप्रस्थ जय इंद्रप्रस्थ जय इंद्रप्रस्थ जय इंद्रप्रस्थ जय इंद्रप्रस्थ जय इंद्रप्रस्थ।
So can you hear me now? मेरी आवाज आ रही है? Yes, 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 ma'am. yes, yes, ma'am. तो पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे नमस्कार। आपने इस लायक समझा। नमस्कार, नमस्कार। अपने कुछ भावनाएं, अपने कुछ विचार, अपने कुछ इस जीवन से संबंधित महिलाओं के प्रति हमारी संस्कृति क्या कहती है उसके बारे में आप सबसे साझा कर सकूं। मैं तो आपको ये अवगत हो जाए कि मेरे ट्रस्ट जो द्रौपदी महारानी के नाम से स्थापित हुआ है 20 साल पूरे कर चुका है, 21वें साल में है। और मैंने द्रौपदी नाम क्यों रखा है ये आज के संदर्भ में, आज महिला दिवस के संदर्भ में बताना मेरे हिसाब से सार्थक होता है मेरे लिए। हाँ, मैं द्रौपदी के जन्म स्थान से हूँ। हमारा पुश्तैनी जगह सदियों से है। पांचाल देश हमारी पुश्तैनी जगह रही है, लेकिन वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण ये है जानना कि द्रौपदी ही क्यों। राम मनोहर लोहिया जी ने एक बार लिखा था, वो एक प्रोफेसर थे यूपी के, और एक तरह के कहना चाहिए सुब्रमण्यम स्वामी जी की तरह एक इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ पॉलिटिशियन थे। उन्होंने कहा था, इफ आई हैव टू चूज बिटवीन द्रौपदी एंड सीता, आई विल ऑलवेज चूज विमेन। उन्होंने ये क्यों कहा था? क्योंकि उन्होंने द्रौपदी के बारे में एक बहुत बड़ी डीप रिसर्च करी थी, जो रिसर्च मेरा सौभाग्य है मैं पुश्तैनी से जानती भी हूँ और मैंने उसको पुनः खोजा भी। तो द्रौपदी नाम मैंने इसलिए चुना कि द्रौपदी का जो जन्म स्थान है, जो कांपिल्य है, राजधानी पांचाल देश की, अगर आप इंटरनेट पे टाइप करेंगे तो आपको कांपिल्य टाइप करिए और वहां बहुत शोध हुआ है। मतलब कहना चाहिए कि पांचाल का शोध तो 1940 से, ब्रिटिश के टाइम से हम भी वहां आए थे, जो फर्स्ट इन्होंने स्थापना करी थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, और उन्होंने ही इसको चिन्हित भी कर दिया था हमारे पूर्वजों के साथ बातें करके और उनके ग्रंथ देखकर कि ये वही स्थान है जो कि प्राचीन कांपिल्य देश का राजधानी थी। काकेत से लेके ब्यास तक सीमाएं चलती थी, लेकिन बाद में वो दो भागों में बट गया, कुरु और पांचाल। पांचाल करीब ऑलमोस्ट 8 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी एंड उत्तराखंड मिला के बनता था। और फिर बाद में आगे आगे चिन्ह छोड़ जाती है। 10th सेंचुरी में वहां पे मुगलों ने आके जो भी कुछ को करना था करा, और इसका फर्दर डिवीजन होते होते आज के समय कांपिल्य एक छोटा सा कस्बा बन के रह गया है। जिला फर्रुखाबाद में 1717 में इसका नाम कांपिल्य से हो गया था फर्रुखाबाद। फारूक शेयर जो कि औरंगजेब के बेटे थे, उनके नाम से। हम उस पे नहीं जा रहे हैं, हम आ रहे हैं महारानी द्रौपदी पे, और किस तरह से वो हमारे जीवन की हर ये और पुरुषों के लिए भी। द्रौपदी 3 चीजों को चिन्हित करती है। पहली चीज ये है कि हमें अपने इतिहास में जानना चाहिए, इतिहास से सीख लेनी चाहिए, और इतिहास से सीख लेके अपने आज के जीवन को और हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए इतिहास को पढ़ना जरूरी है, और सही इतिहास को पढ़ना जरूरी है। तो जो कि विध्वंस हुआ मिडिवल एज में, और जो मैक्यूलर स्टडीज ने हमारे साथ खिलवाड़ किया कि हमारे ग्रंथों को वो ना उनकी मंशा हो रही हो, उन्होंने तोड़ मरोड़ के पेश किया। महाभारत के साथ एक बहुत बड़ा कहना चाहिए दुर्भाग्य हुआ था, वो मैं बाद में बताऊंगी। तो द्रौपदी पहले बताती है सबसे पहले कि हमें अपनी प्राचीन महिलाओं
के बारे में, उनकी हिस्ट्री के लेंगे, जैसे हम श्री राम के स्ट्रगल के बारे में सीखते हैं, तो हमें मालूम होता है कि एक सत्य इंसान को राम राज्य स्थापना करने के लिए कितनी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। इसी तरह से हम श्री कृष्ण के बारे में जब जानते हैं कि जिस दिन से उनका जन्म हुआ उसके पहले से ही उनके ऊपर कितने पहाड़, लेकिन उन्होंने उनका सामना किया और आगे चल के वो हमारे देश के एक बहुत बड़े, कहना चाहिए, प्रेरक बने, जिन्होंने गीता का हमें ज्ञान दिया। इसी तरह से महारानी द्रौपदी के बारे में मैं कहने से पहले एक और बात कहना चाहूंगी। हमारे वेद कहते हैं कि महिला को, बेटी को पहले पढ़ाओ लिखाओ और उसके बाद उसको ये छूट दे सकते हो कि वो स्वयंवर करे या गंधर्व विवाह करे या आप उसका विवाह निश्चित करना चाहो, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता होनी चाहिए कि उसको हमारे वैदिक ज्ञान को जानना है। वैदिक ज्ञान इस विज्ञान जो कि संस्कृति प्रकृति से समझ के हमारे ऋषियों ने लिखी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम प्राचीन महिलाओं के बारे में जानना चाहते हैं या जानने की प्रेरणा देते हैं, तब हमें यह जान लेना चाहिए कि उन महिलाओं ने जो भी संघर्ष लड़े, उस संघर्ष में उनका एक जो ज्ञान था, उनकी जो नॉलेज थी, वो उनके काम आई। तो द्रौपदी एक हमारा एक सिंबल है कि गो बैक टू योर रूट्स, अंडरस्टैंड द पास्ट, टेक लेसन्स फ्रॉम एंड इंस्पिरेशंस फ्रॉम आवर एंशिएंट हीरोज एंड हीरोइंस। नंबर 2, वो ये दिखाती है कि परिस्थिति विपरीत हो तो आपको उसका सामना कैसे करना चाहिए। और मैं एक छोटे से उदाहरण से दूंगी कि जब 13वें वर्ष में उनका वो हुआ अज्ञातवास, जब उनको एग्जाइल में भेजा गया और 13वें वर्ष में उनको एग्जाइल में छुप के रहना था, तो उसने कहा कि मैं खाली, मेरे विराट नगर में भीम रसोइये थे, अर्जुन डांसर बने थे, इस तरह से विभिन्न 5 पांडव कुछ अपने अपने काम कर रहे थे। तो द्रौपदी ने भी क्या करा, उसने विराट नगर की किंगडम की रानी के यहाँ एक हेयर ड्रेसर का काम, क्योंकि उसमें नॉलेज थी और उसमें स्किल थी। शी हैड डेवलप्ड अ टैलेंट फॉर हर हेयर। हेयर ड्रेसिंग जो हमें पांचाल में एक्सकवेशन में उसकी जो मूर्ति मिली है, उसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि उसको कितना अच्छा टैलेंट था हेयर मेकिंग का। ओवरकम एडवर्सिटी विथ डिग्निटी. She did not crib and cry, oh, what has happened to me? What has people done to me? What has the world done to me? Why should I suffer all this? No. She stood up. कंधे से कंधा मिला के वो अपने पत्नियों के साथ अज्ञातवास, जब उनको वनवास का ऑर्डर भी दिया गया था, तो उसके पिताजी ने उसके बेटे भाई को भेजा कि जाओ अपनी बहन को लेके आओ, मेरी बेटी जंगलों में नहीं भटकेगी। तो उसने क्या कहा कि ये मैं इनकी अर्धांगिनी हूं, मैंने इनका साथ निभाने का वादा किया, मैं क्यों जाऊं अपने वापस घर। एंड सो शी शोज दैट शी फॉलोज संस्कार and she has the talent and the knowledge to also keep the Pandavas together. In many times in the Mahabharata, you will see she's arguing with them. She's explaining to them their faults. And she challenges the court itself. She challenged the first woman ever to challenge the king on legal grounds. That how could Yudhishthir pawn me when he himself did not have the power because he had become a das. So what I'm trying to say that knowledge is very important. Skill development is very important, and this is what he teaches us when she becomes a hairdresser to another queen, is that no job is menial. कोई भी काम बुरा या छोटा या बड़ा नहीं होता। हर काम की अपनी अपनी एक महत्व होती है, करने वाला उसका स्टेचर बढ़ा देता है। So, even in cities, I tell them to learn from the women of our past so that we empower ourselves. तो द्रौपदी के बारे में तो मेरा ट्रस्ट का नाम द्रौपदी इसीलिए रखा गया
कि मैं जानती थी कि द्रौपदी वो तीन कि हमें अपने नॉलेज स्किल को कैसे डेवलप करना है, हमें अपने इतिहास से कैसे जोड़ना है और हमें विपरीत परिस्थितियों से कैसे लड़के आगे आगे आके अपना एक अस्तित्व बनाना है. She was the woman who actually created her own identity. And so I remember once gentleman asked me when I started discussing that मेरे को बहुत disturb होता है when people start blaming her for having 5 husbands because they do not know the facts behind the 5 husbands. So he says you should be proud that she was a woman who had the guts to take 5 husbands. If a king can take many wives, why can't a woman take many wives? That was the interpretation of a foreigner. Let me tell you about Draupadi, that the 5 Pandavas actually, as per our Padma Puran, the Skand Puran, the Shiv Puran, the Kampil Mahatva, and the Mahabharata text, she is the Shakshat avatar of Shri, that you will be born in the land of Chandravanshi king, and you will be the consort of Shiva's 5 aspects. So the 5 Pandavas are 5 aspects of Shiva. अगर हम लोग आज शिवरात्रि का दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, हम जानते हैं कि हम शिवलिंग की पूजा करते हैं. हमारे पांचाल में शिव जी को चौमुखी रूप में दिखाया जाता है. चौमुखी मीन्स उनके 4 फेस चारों तरफ और मेन इज युधिष्ठिर एंड द 4 अदर पांडव्स. तो कहने का मतलब ये है कि we have to learn our knowledge of the past, then we are able to interpret correctly. So she took 5 husbands on the request of Shri Krishna himself when he came for the Swayamvar. So women of the past had the knowledge and the skills, to be able to overcome and to stand up for their rights. And she stood up for her right in the court. And she said, challenge. And that is why Dhritarashtra was actually bound to say कि भाई तुम फसारा वापस ले जाओ. लेकिन उसने कहा नहीं, मैं वापस नहीं लूंगी. आपने जो आदेश दिया वो मैं मानूंगी. हाँ. So I will just take 1 minute. Today being International Day, because my staff has to leave, I want to show a small video of what we are doing for Ma Yamuna. Today we are celebrating International Day with Ma Yamuna, and then I will continue. It's just a very 2.5 minutes video. Because he will leave, then I am visually challenged. Some second, yeah. Yes, ma'am. Go ahead. Go ahead, ma'am. It's our pleasure to see. Yeah. डाउनलोड ठीक से नहीं करना. Can you connect the phone with it? So I will just continue in the meantime. He's just bringing it. So what we have to now understand that when we are talking about International Women's Day, we must know some facts about the women who have been most misperceived. When I started my career as an entrepreneur, chosen by SIDBI in 1995, able to provide me and the skills that I acquired, I was quite successful. And the question used to be always there, how is she successful? So many people in Delhi would raise that question कि ये इतनी कामयाब कैसे होती है, क्या बात है? मतलब कि they don't respect a woman for her knowledge and her skill, her abilities, her capabilities. So when I connected with Draupadi's land, I said, for centuries we have been told, how many hundreds of years we have been told that the reason of the war at the Kurukshetra Dharam Yudh was Draupadi. Now let me just explain to you 3 little facts about Draupadi, and then I will talk about general women empowerment. Draupadi was not even present at the point where मीरा मैम Duryodhan fell. a request, मैम Yeah. थोड़ा हिंदी में बताइए क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को भी
हाँ जी, स्टूडेंट्स को भी समझ में आए। सॉरी हाँ। तो द्रौपदी, तो 3 इंपॉर्टेंट बात मैं आपके बारे में, द्रौपदी के बारे में बताना चाहूंगी, जिससे कि आपको मालूम होगा कि राम मनोहर लोहिया ने और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो मुझे नोट लिखा था द्रौपदी के बारे में, शी रिप्रेजेंट ये नारी सशक्तिकरण की वो एक प्रतीक ही नहीं जहाँ दुर्योधन गिरा। वो क्यों नहीं थी वहां? क्योंकि उस समय उसके उसके पति का और उसका राज्याभिषेक हो रहा था, और हम जानते हैं अभिषेक में यज्ञ होता है, उसमें पति और पत्नी दोनों खड़े होते हैं, और 100 से युवराज आए थे, उनकी देखभाल में वो लगी हुई थी, और वो इन सब चीजों में इतनी ज्यादा इन्वॉल्व थी कि वो क्या अपने देवर को लेके घूमेगी, आओ आओ मेरे महल को देखो, तो उसको लेके दासियां घूम रही थी। हंसी। दूसरी बात कही जाती है, उसने कहा अंधे का बेटा अंधा। हमारे ग्रंथ आप ओपन करके देख लीजिए, सभा पर्व ने पूरा डिस्क्राइब करा है इंद्रप्रस्थ में क्या हो रहा था, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि उसने कहा जो भीम ने कहे थे। जब भीम के पास ये सूचना पहुंची कि दुर्योधन गिर पड़ा है पानी में, उसको कारपेट, उसको एक कालीन समझ के, तो उसने कहा हे धृतराष्ट्रपुत्र, उसने एक तंज कसा, उसने सार्कास्टिक रिमार्क कहा कि हे धृतराष्ट्रपुत्र, क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं देख पाता, वो भी बेचारा अनशन लगाना बिना जाने पूछे, बिना किताब पढ़े। हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा अन्याय एक उस नारी के लिए हुआ है जो साक्षात श्री का अवतार थी, और जिसने जन्म ही लिया था कि श्री कृष्ण के साथ उनकी सखा बनकर धर्म की स्थापना में वो अपना एक किरदार निभाएगी। इसीलिए जब युद्ध होता है कुरुक्षेत्र में, तो वो स्वयं कुरुक्षेत्र युद्ध में जाके खड़ी रहती है और वो देखती रहती है कि न्याय होगा। और जब अर्जुन अपने शस्त्र डाल देते हैं और कहते हैं, तो कृष्ण भगवान को याद आता है, उन्होंने उसको वचन दिया था कि न्याय होगा। तो हम कृष्ण भगवान और द्रौपदी का जो एक रिलेशनशिप था, उससे हम क्या सीखते हैं कि नर और नारी दोनों बराबर हैं। शिव और पार्वती से भी हम दोनों एक दूसरे की शक्ति हैं। तो वो उस समय जब वो कहते हैं, तब वो कि भाई अब मुझे तो न्याय दिलाने का मैंने वचन दिया अपनी सखा को। शी वॉज द इंटेलेक्चुअल पार्टनर ऑफ कृष्णा। आप पूरी महाभारत पढ़ेंगे, समय समय पे देखिए कृष्ण भगवान द्रौपदी के साथ वार्तालाप करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज महिला दिवस के दिन हमें इन अपने ग्रेट पर्सनालिटी से, हमारे ये जो नायक रहे हैं हमारे इतिहास के, उनसे ये सीख लेनी चाहिए कि हमें दोनों मेल फीमेल को। तो शी स्टार्टेड गिविंग द sermon of गीता to Arjun to inspire him to fight for justice, and he could do that because he knew that द्रौपदी वहां बैठी है और उसने उससे न्याय की गुहार करी थी, और आज समय आया है मुझे उसका न्याय दे। द्रौपदी neither she was responsible, मतलब द्रौपदी की वजह से कोई भी युद्ध नहीं हुआ है, वो विक्टिम थी इस धर्म युद्ध की। और विक्टिम इसलिए थी क्योंकि ये भाई लोग आपस में पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे थे, उनको पावर चाहिए था, दुर्योधन को पावर चाहिए, आपसे उसका नहीं था, क्योंकि वो एक केयर टेकर किंग का बेटा था, वो राजा का बेटा, डायरेक्ट राजा का बेटा नहीं था। फिर भी उसे एक मौका दिया गया। युधिष्ठिर और दुर्योधन का एक कंपटीशन हुआ, युधिष्ठिर जीत गया, फिर उसने लाक्षागृह किया, फिर दुर्योधन खुंदक में ईर्ष्या में आके उसने एक प्लान बनाया कि हमें हर तरीके से इनको लेना है। और उसने क्या करा, उसने नारी को, उसने देखा कि द्रौपदी पांचों को एकजुट करके रख रही है, तो उसने उस पर प्रहार करा। बिकॉज द
एक पुरुष का, एक नाजुक, कहना चाहिए वीक मैन का सबसे बड़ा इतिहार होता है कि नारी के ऊपर वॉर करो। ये सदियों से चला आ रहा है। नारियों को उठा के ले जाओ, नारियों के साथ दुष्व्यवहार करो, नारियों को पीड़ित करो, ताकि इनके घर के जो मेल मेंबर्स हैं वो उनको उनको आओ, ताकि हम लड़ाई कर सके। आज से इसीलिए अपने इतिहास को जानना, अपने इतिहास की महान नारियों को जानना। इसके साथ साथ हम आज के, अगर हम आगे चल के बहुत सारी नारियों के बारे में हम, अब ऑब्वियसली जब हम नारी के बारे में पढ़ते हैं तो गोपाला और ये सब जितनी जितनी विदुषी नारियां जो कि मतलब कहते हैं ना वार्तालाप में और शास्त्रार्थ में निपुण थी, इन सब के बारे में तो जानते ही हैं। लेकिन क्या हम जानते हैं कि हमारी जब आजादी की लड़ाई शुरू हुई उसके पहले से भी नॉर्थ से लेके साउथ तक कितनी महिलाओं ने अपने बल के ऊपर फॉरेन है, ठीक है। और जिन्होंने ये हमारे महाराष्ट्र की इतनी सारी रानियां मिली, तो मुझे बड़ा सौभाग्य हुआ कि मुझे अभी रिसेंटली दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जीजाबाई सम्मान भी दिया गया था। तो जीजाबाई तो नारी सशक्त अगर होती है तो नारी सशक्त होके एक कहते हैं कि जन्म देती है, पालती है, पोसती है। इसीलिए हम लोग जो हमारी प्रकृति है उसमें जो ये नदियां हैं इनको हम माँ का दर्जा देते हैं कि उनके पानी से सींचकर, उनके पानी से नरिश होकर, उनके पानी से बोए हुए पेड़ हमको मिलते हैं, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ और सुंदर होता है। तो नारी को एक मान सम्मान देना हमारे प्राचीन संस्कृति की एक, कहना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस पूरे विश्व के लिए। हमारा जो वो पूरे हमारे ग्रंथ बने थे, हमारी प्रकृति बनी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा समय आया कि हम अपने ग्रंथों से वंचित हो गए। ना हम रामायण पढ़ सके, ना हम महाभारत ग्रंथ पढ़ सके, ना अपने वेद पुराण पढ़ सके, क्योंकि उनको नष्ट करा गया। महाभारत के साथ बहुत बड़ा एक नॉर्थ इंडिया में एक राजा हुए थे अकबर, मुगल राजा। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का ट्रांसलेशन करा, लेकिन जब उन्होंने महाभारत ग्रंथ का ट्रांसलेशन अपने सुपरविजन में 4.5 साल लगा के बदामी और अबुल फजल के स्कॉलर्स बुलाए, आर्टिस्ट बुलाए, क्योंकि वो अनपढ़ थे। उन्होंने उसको पिक्टोरियल वे में एक किताब निकाली जिसका नाम उन्होंने अनफॉर्चुनेटली रख दिया रज़म नामा। रज़म नामा का मतलब होता है एक लड़ाई की कहानी, द बुक ऑफ वॉर। उस समय से एक जो, और इसी किताब के प्रीव्यू में लिखा गया है, उसके भूमिका में लिखा गया है उनके ऑथर्स द्वारा, कि ये ग्रंथ अकबर ने इसलिए ट्रांसलेट करने का कहा क्योंकि ये हर घर में रोज पढ़ा जाता है। इसमें इतनी महत्वपूर्ण जीवन शैली की बातें हैं, ज्ञान की बातें हैं, कि मिडिवल टाइम से आज तक लोग डरते हैं कि महाभारत ग्रंथ को घर में मत रखो। हम कहते हैं महाभारत हो जाएगी, ये तो कितनी गलत बात है। महाभारत का मतलब होता है महान भारत की, भरत वंश के अलावा जो विराट भारत का वो ग्रंथ है। महाभारत का ग्रंथ मतलब लड़ाई नहीं होता, लड़ाई तो धर्म युद्ध था या कुरुक्षेत्र युद्ध था। तो क्योंकि ये उसको इस तरह से ट्रांसलेट करके नाम गलत दे दिया गया, तो हम सदियों से ये सोचते आ रहे हैं कि महाभारत हो जाएगी। 18 दिन की इस ग्रंथ सेलिब्रेशन। और अगर आप शांति पर या अनुशासन पर पढ़ेंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपके कॉलेज में कुछ लेक्चर शांति पर और अनुशासन पर्व पे करे जाए। अनुशासन पर्व की शुरुआत ही होती है कहने से कि मेल फीमेल दोनों बराबर हैं, और शांति पर्व में दिखाया जाता है किस किस तरह से उसने सामाजिक काम किया, लोगों की पीड़ा सही देखी और उसका समाधान करने की चेष्टा करी। तो ये हम अपने ग्रंथों से ही सीख सकते हैं, और हम चाहेंगे कि आज का दिन इस तरह से
सार्थक हो कि ना तो हम अपने इतिहास कृति से उत्पन्न संस्कृति के बारे में एक वैज्ञानिक सोच रख के ये समझ ले कि ये जो नदियां को हम क्यों माँ कहते हैं, क्यों इसको ये यम की बहन है यमुना। और यमुना अगर आप देखेंगे दिल्ली में आके, आप बिलीव नहीं करेंगे कि यमुना के दिल्ली के पानी में एक बूंद यमुना का पानी नहीं है, क्योंकि सारा का सारा पानी हथनीकुंड हरियाणा बॉर्डर पे 3 स्टेट्स में डिवाइड हो जाता है, यूपी, हरियाणा और दिल्ली में। और वहां से जो उसका फ्लो मेंटेन करने के लिए, ताकि फ्लो मेंटेन नहीं होगा तो नदी मर जाएगी, जो जितने नल वाटर, सो देयर इज नॉट वन ड्रॉप ऑफ वाटर। तो आज इस महिला दिवस पे हमें माँ यमुना को भी याद करना है। हमें अपनी प्राचीन संस्कृति और विरासत को याद करके महिला का जो सम्मान हमारे पूर्वजों ने दिया है, उधर मिलाकर अपने साथ लेकर अपने इस भारत देश का गौरव आगे बढ़ाना है। क्योंकि शुरू से ही जब माँ अच्छी होती है और बहन और सब जो हम लोग जो महिलाएं हैं, वही इस देश की कहते हैं कि पालना होती है। तो माँ यमुना हमारी पालना है, इंस्पिरेशन है। तो आई वुड लाइक टू नाउ it's not coming. Why? Put it on the desktop. Na? Can we? But they can't see the video, na? No, but why is it not showing? Virus. No, you email it to me. Email it and then take it, na? Email नहीं हो रहा है. You know, because that is the हमने कहते हैं ना, महिला की जो स्थिति हुई है वो माँ यमुना की स्थिति भी। What is the WhatsApp this song to you and can somebody sing? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You just WhatsApp me. I will send to my admin. Because the words are very significant, you know, in this. That's why I wanted to. No, not a problem, ma'am. You could also share to us so that we will streamline. Share this, Archana. Yeah. Huh. Actually, it is just being processed, but still I thought that it would be worthwhile sharing. इसका अभी फ्रंट पेज और लास्ट पेज क्रेडिट्स पेज नहीं बना है। परसों ही ये सॉन्ग हमने तैयार कर लिया। When you phoned me ना कि हमको बोलना है, तो मैंने कहा जल्दी इसको got it. So if you could download and play it from your end, please, Archana. Did you? Yes, ma'am. I will do it. So I've sent you the link. Yes, please send me so that I'll do it. I've sent it on your WhatsApp. Okay, let me just check out. इसमें बज रहा है? तो फिर इसमें डाउनलोड नहीं कर सकता क्योंकि आपका रिकॉर्डिंग ऑन है। डाउनलोड करके मैं इस पेन ड्राइव में ले रहा हूँ ना, शो नहीं कर रहा। Okay. कुछ वायरस। She will do it. हाँ, she will do it. हाँ. वो वहीं पे डाउनलोड करके। So this is a very, very crucial day for they call के women-led development. जब वो women-led development की बात करते हैं, तो हमको और ज्यादा women को, महिलाओं को सक्षम बनाना है, ताकि वो सचमुच हमारे देश का गौरव, हमारे देश की जो क्या है उसको आगे तक ले जाने में, और हम बिल्कुल भी अपने माइंड से निकाल दें कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट वुमेन के बारे में हमारे देश में कहा गया है, उसको हमें बिल्कुल नकारना है। क्योंकि हम जब सोशल साइंसेस पढ़ते हैं, लास्ट 200 इयर्स में लिखी गई, विधवाओं को तो बहुत बुरी तरह से ट्रीट करा जाता है वुमेन के भारत में। लेकिन कुंती भी तो एक विधवा थी। उसने तो कभी भी, कोई बता सकता है पूरी ग्रंथ पढ़ के कि कुंती को किसी ने दुत्कारा क्योंकि तुम विधवा हो?
उसने किस तरह से अपने पांचों बकेली होते हुए भी। इसलिए हमारी जो अवधारणाएं हमारे देश में महिलाओं के बारे में बाहर से आ रही हैं, विदेशों से आ रही हैं, वो चीज को हमें, यस यस अर्चना, हेलो 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 अर्चना, आई कैन हियर यू। आपको मैंने लिंक भेज दिया, उसको डाउनलोड करके प्ले करना था। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक आपका वो टाइमर भी खत्म हो रहा होगा ना जूम का। अच्छा ठीक है ठीक है, दिस इज ओनली 2 मिनट्स का है, दिस इज ओनली 2 मिनट्स, सो वी कैन एंड इट विद दैट। या सॉन्ग के बाद हम लोग वाइंड अप करेंगे, इसलिए मैं आपको पुनः एडवांस में बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे ये एक अवसर दिया कि मैं आपके साथ जुड़ के कुछ अपनी बातें कह सकूं। और कभी भी आप लोग के मन में कोई भी प्रश्न हो और भी कुछ अगर आप चाहें तो आप बहुत, मतलब मेरा मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपके इस नॉलेज योगदान दे सकूं, तो मुझे बहुत खुशी होगी। सो इज इट प्लेइंग? हाँ, या थैंक यू। Yeah, I just wanted that we should see it because I have compared the plight of women. Yeah. आवाज 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 नहीं आ रही। आवाज आवाज नहीं आ रही। Yes, आवाज we नहीं आ working रही। on it. Yes. we are working, ma'am. We are working on नहीं, it. आवाज आवाज, हाँ। We are working on it. इस सॉन्ग में आप देखेंगे हमने समय को खुद बुलाया था, जिन्होंने महाभारत सीरियल में कहा था मैं समय हूँ, हरीश जी, वो खुद इसमें आए हाँ, प्ले करिए शुरू से, थे हमारे प्रोग्राम में। यमुना का एक हमारा प्रयास है। शुरू से करना बेटा। नहीं, सॉन्ग नहीं आ रहा, मतलब उसके गाने नहीं आ रहे हैं। हाँ जी, शुरू से करो बेटा। जाफर साहब इसके Yes. म्यूजिक, यस मैडम। इसके Yes, yes. म्यूजिक देखिए। काफी आगे चला गया, काफी आगे चला गया, वो आवाज कर देते। ना इसकी म्यूजिक नहीं आ रही है। हमने तो म्यूजिक के साथ दिया था। मैं प्ले करूँ यहाँ से, प्ले करूँ यहाँ से? आप, मैं प्ले करूँ, आप वीडियो करोगे? हाँ जी, कोई कोई बात नहीं, किसी का भी चलेगा मैम, आइदर और। सुनेंगे ना फिर आप प्ले करोगे तो। जाफर साहब इसको बंद कर दीजिए, मीरा मैम की तरफ से वो हाँ। कर लेंगे इसको। हाँ, डिसमिस कर। इसमें आ रही हो? कृष्ण की यमुना बचाओ यमुना बचाओ यमुना।
Thank you. Thank you. Ma'am, I would like to request you to stay for a while. Dr. Anupama Namburu, who was my old colleague at VIT, Vellore Institute of Technology University, we were working together, and she is a very frontline woman, and she is leading right now in JNU. She is she is addressing for us today for the role of AI in safeguarding nature. So I would like to request you for stay for a while, Of course, it will be my 5 minutes, pleasure to get so that we will be getting connected to her, as JNU is a big knowledge. university, Yes, as it will be we my know. pleasure to Yes, get knowledge. Yes. yes, yes. So thank you so much, Neera Mishra, today for her beautiful and wonderful, insightful words. We'll be looking forward to again, get an appointment with her to invite in our college for the biodiversity safeguarding, creating a biodiversity and ecosystem on our campus. Now, without wasting the time, I would like to take the privilege to invite my colleague, my old friend, who is right now the associate professor at JNU, and she is the associate professor for computer science, School of Computer Science. Over to Anupama, Dr. Anupama, ma'am. Thank you, Archana. Thank you for having me here. And it was really wonderful for me to share the stage with Mishra ma'am. Her thoughts in bringing like our heritage of women and how it impacts our thought process and how to learn things from Draupadi. So thank you so much, ma'am, for sharing the insights on that. So I'll quickly share with a small presentation. If the host can enable me to share my slides, so that Yes. would be great. Jafar sir, could you please coordinate? Jafar sir, Soeb sir, are you there? Yes, madam. Please coordinate. Okay. Dr. Anupama, I would तो like post to करने का request आपको। you थोड़ा हिंदी में भी बोलिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स भी आपको लाइव देख रहे हैं. Okay, I thank I you. know I'll that. try my best. Yes. Yeah. Thank you for accepting. कर देना हाँ आ गया है. You can share this. So is this visible? Yes. Yeah, so first of all, a very good morning to one and all, and a happy International Women's Day to each one of you. Thank you, ma'am. And मुझे जब अर्चना मैम ने बताया कि we would be celebrating the soil, earth and the mother nature, तो मैंने सोचा ठीक है, तो ऑन दी वुमेन्स डे वुमेन्स का बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है, we relate ourselves to the nature. So it invariably says that a woman has a higher role for the nature
And in that perspective, I thought I'll bring in my thought process as artificial intelligence for the mother nature. तो पुरानों से it's like we had a tendency that we were drawing lines, right? So woman in role is for nurturing, sustenance, and also like giving birth, and it provides life and nourishment. So the same way mother nature in various cultures, and it has been portrayed that earth is a nurturing and a life-giving force. So when we combine these two things together, so हम पंचभूत कहते हैं, तो पृथ्वी, जल, वायु, आकाश एंड अग्नि, सो इनके साथ ही हमारा नेचर बिल्डअप हुआ है. एंड हम इंडिया में सब लोग ये मानते हैं कि सभी जीवन में, आई मीन इन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द अर्थ वी सी द लाइफ, वी सी गॉड, राइट? सो इसकी वजह से हम जो भी चीज देखते हैं उसमें हम गॉड की मानते हैं. तो अभी जो मिश्रा मैम सेव यमुना के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जो गॉडेस मानते हैं, हम उनको लाइक ड्यू टू पोल्यूशन लॉट ऑफ थिंग्स, सो दे आर गेटिंग एंडेड. तो उनको हमें रिवाइव करना है, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट. एंड जब अर्चना ने बताया कि वी विल यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सेलिब्रेटिंग सॉइल, अर्थ एंड ह्यूमन, तो मैंने सोचा कि व्हाट इज द करंट स्टेट, कहाँ है हम, तो इन पर्सपेक्टिव विद द एनवायरनमेंट, तो उसके हिसाब से मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ. और हमारा जिम्मेदारी क्या है, इसको आगे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. तो when it comes like now if you see, India is in 180th position among 180 countries that have participated in Environment Performance Index, which is the statistics given by the Yale University, which does the statistics. तो इसका मानना है, तो वी आर लाइक इन द लास्ट पोजीशन इन मेंटेनिंग द एनवायरनमेंट. तो इसकी वजह, आई मीन द इंडेक्स मैक्सिमम टेक्स ऑल दीज थिंग्स, लाइक 20% एनवायरनमेंट हेल्थ को देखती है, 42% आई मीन इकोसिस्टम की वाइटैलिटी देखती है, एंड 38% क्लाइमेट चेंज के बारे में देखती है. तो व्हेन द इंडेक्स इज टेकन केयर, लाइक हमारा लास्ट होने का वजह ये था कि हमारा एयर पोल्यूशन एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट्स बहुत ज्यादा था. तो इसकी वजह से हमारा वेरी लो इंडेक्स आ गया है व्हेन कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज. So when it comes to our scenario, mostly like we are affected by the air quality. If we see the index of this, 11% of us are affected by the air quality. So air quality is highly polluted because like this is mainly because of the burning crops during October and November. So during that time, the Himalayas are becoming our barriers because हवा ऊपर नहीं जा सकती थी. तो द कोल्ड की वजह से वो हॉट एयर ठंडा पड़ने से वो एनवायरनमेंट के ऊपर ही चलता है, विच इज वेरी क्लोज टू द लेयर ऑफ द अर्थ. एंड जब वो आई मीन द ब्रीजेस विल टेक देम the same path like this. Okay, they start from the Pakistan, and which, I mean, the borders of the Punjab, all these things it carry along and go to the Bangladesh. तो इसकी वजह से जब I mean in this period of time when people start burning the charcoal or the waste of the plants, so this is really causing a lot of impact. And the top 10 I mean the states which are impacted in the worldwide are the North Indian countries, I mean North Indian states. So this is impacting so much. So we have to take measures. The government is taking so much of efforts in improving this, but as a human being, we should take responsibility to educate the farmers and instead of burning, seeing an alternative ways of how we can, reuse the crops.
So that is one thing. And one more thing is most of the rural areas still use fossil fuels. So they depend on wood and all these things. आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने अनाउंस किया है there is a reduction in the price of the LPG gas. Right. So it makes important because they have provided like these many crores of cylinders, LPG cylinders, so that the people who burn the wood would be reduced. So बहुत कम हो जाए और it can improve the air quality. तो ये एक initiative है which government has really worked on and it is improving. And एक और है, it's like we have to work on air pollution. Like there should be models which should predict the air quality. So a student from Gujarat, he has built up a small air purifier by using a algae. तो उस algae को जब convert करते हैं, the main pollutant are the particle matters, which is a carbon. So this purifier which the student has designed, it absorbs the carbon and it removes the purified air outside. So like this, innovations should come up and many AI tools are coming up to analyze किस जगह पे बहुत सारा पोल्यूशन आ रहा है. तो ड्रोन्स के हेल्प से दे आर जस्ट मॉनिटरिंग वहाँ क्या है विच इज कॉजिंग द पोल्यूशन, उसको कैसे रिड्यूस करना है. तो दैट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव विच NCR is taking up. And also like AI based traffic management, this is also one important thing that we have to work on. Because when a smart traffic system is there, jab if longer vehicles are waiting, so the signal should automatically guide them to move ahead. And where there is a less traffic, it should take very little time to automatically do it, rather than fixing a time frame even though there is no traffic, like putting a 60 minutes time, and the people will still keep on waiting. तो ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द डेंसिटी या कितना गाड़ियां हैं उसके हिसाब से कम या ज्यादा टाइम ऑटोमेटिकली ट्रैफिक लाइट्स में लगाएंगे. तो there won't be need for waiting in the vehicle. So that itself improves like the reduction in the air pollution, and that will also enhance. And also बहुत सारे sensor networks use करके we can reduce air pollution and we can monitor air pollution. Like घरों में अगर LPG का लीकेज हो रहा है, ऑटोमेटिकली अलर्ट मैसेज आना है ताकि the woman in the house gets alerted. So there should be like so many sensors which are using today to identify the the toxicness in the nature. So the toxicality in the air quality is measured and it is given. So nowadays मोबाइल फोन में हर एक को एक ऐप होता है which says कितना एयर क्वालिटी है, कितना टेम्परेचर है, कितना बारिश होने वाली है. तो इट्स लाइक लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग रिसीव्ड बाय यूजिंग जस्ट सेंसर्स नेटवर्क. तो इसकी वजह से हम ये टूल्स बना सकते हैं जिसके साथ हम मेजर कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं. एंड बहुत सारे इंडस्ट्रीज भी दे आर एमिटिंग लॉट ऑफ पोल्यूशन. तो जब इतना पोल्यूशन इंडस्ट्रीज जनरेट कर रहे हैं, तो एक ML मॉडल यूज करके हर एक कंपनी का डेटा एनालिसिस करके कितना वो एमिट कर रहा है, कितना हैजार्डस है, कितना वो लिमिट के ऊपर जा रहा है, ऐसा हम आइडेंटिफाई करके वी कैन स्टार्ट पुटिंग ऑन पॉलिसीज ऑन दैट इंडस्ट्रीज एंड वी कैन रेगुलेट देम. तो हमें ये एक जरूरी चीज बनता है कि ML प्रोग्राम्स बनाए और इंडस्ट्रीज को हम पूरी तरह से कंट्रोल कर सकें कि दे आर नॉट गोइंग टू जनरेट पोल्यूशन. एंड एक और चीज है अवेयरनेस. अभी ग्रीन बोर्ड्स आर द वंस विच आर लाइक चैट बोर्ड्स ब्रिंगिंग अवेयरनेस अबाउट यूजिंग ग्रीन एनर्जीज. तो हम we have to give as much awareness to the public, like the statistics which I said, like 188th rank
we are standing now as per October 2022 statistics released. So it is the time for us, everyone should be like on their toes, ताकि वो हर एक को बताए कि हमारा डेंजरस लेवल में है तो हम इसका इम्प्रूव करना है. तो वी हैव टू यूज चैटबॉट्स, वी हैव टू डेवलप सम एप्लीकेशंस. तो हमारा गवर्नमेंट भी बहुत ही स्वच्छ एप्स बना रही है, तो डिजिटाइज इंडिया बना रही है, टू ब्रिंग लॉट ऑफ अवेयरनेस टू द पीपल. But still, it is not up to the mark कि everybody should take now the responsibility to engage in good things and provoking and bringing awareness to the people. And because in NCR, Diwali में crackers फोड़ना allowed नहीं है, but still we hear sounds because the lack of awareness in the people. Right. So when it's time for us to work for the benefit of the pollution, so everybody should obey that rules and we should go ahead. And the next important factor that affects the air quality is the electricity that we depend upon. So we depend like 70% on coal burning for the generation of electricity, and baki renewable hydro, gas, nuclear are like very nominal. Still they need to be used. So government is bringing plans so that like to use electronic vehicles, to use like solar energy for the for generating electricity in the household. तो इतने सारे जब government is providing, the people should take up, and whenever they buy new things, they should see that like they are supporting the government in reducing the pollution. So buying e-vehicles, maybe buying the solar based lights in your house, maybe, or converting your home with a solar light. So everything adds up because an energy produced is an energy saved. So whatever you save is energy produced. So if you try to minimize the electricity usage, automatically it's like you have energy left out. So there is no need to burn more coal so that to produce the electricity. So it is always necessary for us to work on these measures as well. So to leverage the conservation of electricity, the many AI-based mechanisms have come up. So these inventions need to be brought to each and every house so that effectively the electricity can be used. So like smart tiles and flooring. So nowadays the sensor-based tiles are available. When we walk on that tiles, so automatically the energy is produced. So whatever the energy is converted into electricity, or that electricity can light the entire house. Okay, so we are using the footwalk, the mechanical power को हम convert कर रहे हैं और हम household purpose के लिए use कर रहे हैं. Or smart street light. Nowadays, if you see, like there is no smart mechanism available, like every day, entire night, the lights will be glowing. So let's say if you consider the entire India, there may be like millions and trillions of lights glowing all the time. So if we can have a smart street light system where if there is a motion और कोई person उस जब जा रहा है नजदीक लाइट के पास या कुछ आवाज होता है, तब सडनली वो लाइट जलना है. जो बाकी लाइट से कुछ साउंड नहीं है, कुछ मूवमेंट नहीं है, उनको ऑफ कर सकते हैं. We can save nearly like 10% of the entire energy that we are producing, because every day till night, like in summer days also, like 6 is still the light will be there. Only after 7 the light gets lesser. So 6 to 7, saving 1 hour time is also really great. And based on the sunlight, automatically increasing the light capacity, decreasing the light capacity. So is tarike smart light systems, if we can include, that will give us a very vast saving of time. Okay. And wearable energy harvesting, like if we have a small devices like incorporated in our shoes maybe, or in our wrist, whenever we work or whenever we walk, so the energy gets produced, and that energy we can use it to
power up the watches, maybe power up small devices, small batteries. So the wearable energy also should be harnessed. And like energy generated payments, अभी जब malls में या public places में बहुत सारे lights और बहुत सारे people when they walk, if the payments are made with the sensors, तो बहुत सारा energy I mean we can generate, and that energy we can use it again in for lighting the malls. Okay, and even like automatically how many people are there, how much air quality is there, automatically detected by the sensors. तो एयर क्वालिटी की हिसाब से अप डाउन करना, एसी को मॉनिटर करना, वो सब we can automatically conserve the electricity when we target this big places. Okay, and green building technologies, like how we can incorporate renewable energies, how we can build materials and things which does not cause any greenhouse effect. So उसमें भी काम करना है. So we have to work on many things. And smart transportation hubs. So instead of rather using like a car by each and every single person, like smart transportation hubs which can carpool or which can pull up people, and I mean it minimizes the transportation vehicles, and invariably it will reduce the pollution. So these kind of small innovations can be used, which can really impact a lot in producing the electricity, and which can save a lot in doing it. And the third major factor is like waste management, because in India we lack a lot of necessary things जहाँ पे waste का proper manage नहीं हो रहा है. तो if we use AI tools like smart waste bins, so smart waste bins can be used where if the bins are filled, automatically a message need to be sent to the nearby Karmachari, and he should come and collect it. Or like waste sorting automation. So nowadays, green, blue, red dustbins are there, but people never follow that thing. So AI-based automated treatment of or sorting of waste should be there, and intelligent recycling mechanisms also should be in place, because I mean, is into each and every field, whichever I'm talking to. So there are so many inventions and innovations which are made so that we can improve the waste management. Okay, so like predicting the maintenance cost and collection vehicles, optimizing the routes. Okay, I mean collecting the waste and optimizing the landfill areas also, because many of the areas are dumped with the waste. So how to minimize that? So AI tools and sensors are being applied now to analyze kitna space is being used, and I mean how much needs to be like removed, cleared. So many people are working on clearing on dump areas and all these things. Okay, so illegal dumping detection. So how you can smartly package your products. So industry should work in that direction. So smart waste management app. We have built a Swatch app. My student has started it, and it will take time to release. So we are trying to give this app for the volunteers who wish to clean the thing. So we scan the place with the dust, I mean where the waste is there, and we provide some bags so that they can fill it and deposit. So once they deposit, a small rewards which we will be like I mean giving them, which will help them motivate to do such kind of activities. So it's a very small idea, but it is under working, so we have to still work on that. And alternative inventions, like many inventions came up, like designing ink from the air pollution. So a startup company which has generated a machine which extracts the carbon from the air pollution. With that carbon, they are producing the ink. So there are like biofuels from plastic waste. So from the waste, they are producing an alternative diesel which can be used for running the vehicles.
So biodegradable plastic alternatives. So instead of using plastic, so the chemical branch is analyzing on how we can produce like biodegradable sheets. Like nowadays, many of the eating spoons are being replaced with so many varieties of biodegradable materials. So still a long need to be go ahead in producing these things, and turning food waste to biofuels. And some researchers have also done, like they have created bio bricks from the human urine. So there are inventions which are like from the ocean plastic, because lots of people dump their waste into the oceans, right? So all the plastic that is in the ocean, from that they are regenerating and producing clothing out of it. And waste heat recovery is being used in industry nowadays, because industries में जो भी heat produce करता है, that heat they are reconverting it and reusing it for other purposes. So rather than using for one industrial output. So the carbon capture and utilization, so they extract the carbon from the pollution and they are bringing up a building materials like rocks, and from the tissue waste papers, they are producing a I mean, the paper coils which can be used or beneath the floor. They are the waste tar is being used as ink. They are producing lot of things which are converted to the road laying materials. So they are trying to use so much of things, and AI is leveraging these things. So, and one more thing is like ecosystem vitality is one of the important EPI system which they are using to measure the environment. So if we, I mean, if we see the pollution is, I mean, the population is increasing day by day, and the middle class is also increasing, and the need for the land. So in 1961, if 1 acre per person is there, Yeah, but hello, now Ankur. by Where is the hitch now, 2050, it beta? will be just 1/3. So it is quite less, and the people have been Hello, increasing. good afternoon. So So where to is the hitch meet now in that getting the two needs, section post on social media, because I have to answer. I just want so to to forward that meet only these what you have put needs, on we tweet have and to like Insta. do a precision agriculture. So improve the nutrients from the soil. So how to measure that? So sensors are nowadays used, and they are placed in the soil to analyze how much nutrients are there, how we can improve the nutrients in an organic way, and soil health monitoring, automated. So this is one thing which we developed to analyze the moisture sensor and automatically send a message to the farmer indicating that there is no water, you can pump now, the water is enough to stop the motor. So automated ways of things we have designed. And crop rotation also, ICRISAT is one of the satellite based system which is used by India. And the idea here is like they will mitigate the dates of sowing the seeds. Let's say instead of, I mean, usually farmers follow the tendency of their own heritage way of growing the plants. But when ICRISAT told, don't sow now, sow after 1 week. So that small difference has given 30% increase in the productivity. So the time also the satellite is mitigating, the like what crop is best for that land it is mitigating, and when is the rainfall happening. So everything is now being mitigated by the satellites, and they are giving it. So it is the responsibility of our people to adopt these new changes and to cultivate so that it improves the ecosystem as well, right? So weed detections and management, like automatically AI with the image processing, they detect and they identify erosion of the land. We can identify with the drones and with the sensors. So nutrient management. So many things need to be incorporated, and we have to use them in our daily life so that our index will improve further.
Okay, so there are so many greenhouse effects also which are caused, which AI is looking in each and every item, like how to efficiently optimize the energy, how to use renewable energy sources, various other sources of energy we need to incorporate, how to capture the carbon from the pollution and how we can store it in a different way so that it is not causing the greenhouse effect. So precision agriculture will obviously reduce the amount of things that we are putting, like fertilizers, all these things, like climate modeling, prediction. So there are so many things. So I was given 10 minutes, so I'm just quickly wrote it so that at least with the presentation you can understand what are the things that you would be needing. And these are some projects which we worked with my students. So one is irrigation, smart irrigation system, and one we worked for the fisheries in the Krishna district, where we designed a IoT based system. With that, we can detect the pH levels, the nutrients, and we can monitor how the fishes are in the condition. Because suddenly, if the pH level is less than 7, all the fishes in the ponds will die. So that indication will not known to the farmer. So, but by using this device, the fishers, the fisherers will know what is happening in their pond, and with a single SMS, all the information reaches to the farmer. And I am an expert in an image processing, and I also worked on image enhancement techniques where if the cameras in the ponds are really dark in nature, you cannot visualize there is a fish here. So I worked on image enhancement techniques where we can clearly observe the reproduction rate of the fishes, how the fishes are grown, all these things. And I also have worked on drones. So this is one of the drone designed by my student. So we worked on managing the forest fire production. So with the help of drones, how we can detect and how we can reduce the air pollution immediately whenever the incidents happen. So these are few works which we have done, and very simple steps, but a very important difference that they are going to make is like if you stop buying your water bottles in plastic. Okay, instead of, so if when you when the tendency to ask the water bottles reduce, automatically the plastic used for storage is getting reduced. Okay, and if you are incorporating walking or biking when you are in nearby places, so obviously it will reduce the cost involved in transportation, and obviously it will reduce the usage of the production of energy and all these things. And when you are not using turning off lights and unplugging the devices, that is also saving a lot of energy. And eat more fruit that is grown locally rather than from far places. That actually eliminates lots of unnecessary transportation things. But exporting is good, but in the case like importing becomes like we are investing so much on that. So our products should export more rather than we import much. Okay, so that's one suggestion. And use cold water cycling for washing your clothes, because as a woman, many of the people will tend to have lots of attachment with the servants. So it is always directed that when it is full, using the washing machine will reduce lot of water usage and lot of energy that is being used. These are small things, but if it is implemented in every home, like it makes a lot of difference. And keep stuff out of landfilling. So as a woman or as a maintainer of the house, so rather than dumping waste directly onto the wastelands, like unused clothes or unused materials, or which are very good in condition, rather than putting to the dustbins, make proper channelized usage of them, donate them, do charity, do some things. These are very small things, but they will make a lot of impact on our waste management. So I request all to make a small difference. And there are many environmentalists which are, the people are really working hard, like Mishra ma'am.
Like there are so many people who sow trees, the forest man, one person who has really created a forest, pond men who are clearing the ponds and making them available for the biodiversity to come and live, like the different birds are coming up and living in that ponds. So there are tree men. So many people are really doing so much. So at least on this International Women Day, we should take a oath that everybody should plant one tree at least a year. So maybe like 60 years will be, if we live, so 60 plants will be there on our name. So that initiation, at least if everybody can take, there will be lots of plants and which will make our earth so better place. So the marriage of artificial intelligence and the nature, it's like really need of the hour, because we have to improve our index higher and higher, because we are at very low stage now, and it is our responsibility and it is our commitment to the present nature to improve it. Okay, we have to harness the power of AI to safeguard the biodiversity. We have to identify the threats. We have to identify the pollution places which are now in endangering our nature. So there are AI tools, but if all the students, a small thought, a small idea will change lot of things on this world. So I want all the students to think in the directions of preserving the environment, taking care of our mother nature. And as a woman, so you represent a family. So, because women are multitaskers, so they can do multiple things. So, if a woman is highly motivated in the family, so entire family is motivated. So I wish each member of your family to motivate each one of you and understand the current state of our environment condition, and we should improve, and we should take it at most importance, and we should work for the environment from now on. So with this, I'll end my session here. So on this International Women's Day, so it is our responsibility towards our nature as a woman. So we should nurture our environment. So thank you, Archana, for giving me this opportunity to speak on how we can improvise with the AI tools and where we are now. To make real celebrations, everybody should really work hard towards the environment. Thank you. Thank you, Dr. Anupama. Thank you so much for bringing the power of AI, that I believe that is going to save humanity, that is going to save the mother nature, that is going to create the biodiversity, that is going to stimulate the human brain, the actual human brain, who is Yes. a human, who is actually a human. So I would say that the theme resembles with the human, and basically creating the theme like celebrating soil, water, and And human. human. Their AI role is really becoming very stronger. So the men behind the women will give us more boost, and the men behind the women will give us more confidence to create biodiversity. So celebrating together the humans, like male, all the men and women on the earth, it's the right time that we are going to actually celebrate the International Women's Day, and the power to celebrate the power of Mother Nature. So, few minutes, Meera ma'am, few minutes we have actually to have a valedictory session for today. So, I would like to call upon Gadgil sir to give the vote of thanks to all the speakers today, to all the students, and to all the faculty staff members who were watching us today, in order to plant today, start the plantation from today, I would say. So Hello, ma'am. over to Gargil sir. Yes, over to Hello, Gargil sir. yes. Hello, ma'am. Gargil sir is also here to share his view. Yes. Over to Gargil sir. Over to Gargil sir. You Yeah. bring to the screen. Bring him to the screen. Yeah. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam.
First of all, very good afternoon to all listeners. Our today's topic is Dhara, and accordingly, what is Dhara? Dhara means water, soil, and nature. These three things play jointly a role of father. Like a river, mother is in our family a major contributor to the welfare of the family, and father shares other responsibilities. So dhara means it is a continuing process of progress, process of work, and process of going on. So that is called dhara. In order to ensure the proper growth of the nature, we will have to follow certain parameters. Parameters in the sense, we will have to reduce these greenhouses, then we will have to reduce the excessive use of chemical fertilizers, आणि मग काय तर ते सेंद्रिय खतांचा वापर करावा लागेल. मी मराठी आणि हिंदी आणि इंग्रजी तिन्ही भाषेमध्ये बोलायचा प्रयत्न करेन, जेणेकरून आपल्या महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा त्याचा आनंद घेता येईल. So life is a continuing process till the end, which again restarted in another birth as per Hindu mythology. In order to ensure continuing process of dhara, we will have to follow certain parameters to witness the progress of nature and mankind. So, in order to ensure this progress, we will have to curb our certain practices like cutting of trees, then huge quantities of waters are extracted for construction of big apartments and all that. This has resulted into imbalancing of the nature. So somewhere this needs to be stopped. To ensure balancing of nature, we will have to reduce the excessive use of materials, chemical fertilizers, and what we mean to say, earth, oxygen, and nature play a vital role in our life. Similarly, we will have to every day we will have to ensure and to walk for 1 or 2 kilometers every day in order to keep our body fit and in good condition. So these are certain parameters one has to follow. I would like to concentrate on mother's role. In one of the books enjoyed by me, Swami Vivekananda had said that आपला मुलगा देवव्रत निर्माण व्हावा असे कोणत्या बरे मातेला वाटत नसेल, परंतु मनुष्य घडविण्याची कला ही प्रत्येक मातेला अवगत नसते. In English speaking, it is said that every mother wants that his child should be some extraordinary one in Indian scenario as well as on foreign respect. But Swami Vivekananda says further that inculcating good thoughts among children is not the art which is adopted by every mother. So it totally depends on inculcating of the habits. So likewise, behind every successful person, I think that a woman has played a vital role, and it is universal truth. So with this, I would like to conclude my short spell of conversation, and at the same time, as I have been interested the responsibility of expressing vote of thanks, I express my sincere thanks to the distinguished faculties and speakers who participated in this task, and who gave their valuable time, who shared their valuable moments with us. Thank you so much.
Thank you so much once again. I'm thankful to everybody, including my management, for giving me this opportunity to express my thoughts in a shortest possible time. Thank you so much. Thank you, Gadgil sir. I must tell that I have found him as a wise man on our campus till the moment I joined the college. And so wonderful thoughts that you have shared, and you valued it. We will continue with this. The chapter will never end by protecting our biodiversity again with the beautiful participation by the strongest women ever on the earth. So by this statement, I'm going to conclude with the session. I would like to, on behalf of my management, I would like to invite Dr. Anupama Namburu ma'am and Draupadi Trust Chairman Leera Mishra ma'am to visit our campus to help us in finding a biodiversity park and an ecosystem in on our campus. So this is Dr. Anupama Namburu. This is and Neera Mishra ma'am. This is very far. This area is very far from the capital of India, New Delhi. But as we have the proper willpower to do something, nothing can stop us. And this day we will begin by progressing ourselves, visiting India, and then safeguarding the Mother Nature. Thank you everyone for watching us. Dear students, if you are watching us, please learn something today and let's plant a small sapling from our heart of, brightful mind and beautiful mind. Thank you everyone to conclude here. Namaskar. Thank you.